सर मुझे यहाँ पे एक चीज आपको पूछना है, मतलब थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके आपके फिल्मों के बारे में। तो वो जो जब फिल्म खत्म होती है महानगर, तो वहां पे एक डायलॉग आता है कि जो हम लोग जो ब्रेड बटर कमाने के चक्कर में बहुत कावड़ बन जाते हैं। हाँ जब ये आप जो फिल्म मेकिंग में गए, तो क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से, आपके बारे में जितना हमने सुना है पढ़ा है कि आप भी मिडिल क्लास बिल्कुल। फैमिली से थे, तो वो जो एक वो इनसिक्योरिटी से निकल के कैमरा के पीछे जाके काम करना, जो बहुत ही एक इनसिक्योर जगह है, आपको पता नहीं है कब तक आप बना पाएंगे, वो आपने वो ट्रांजिशन कैसे किया? वो अपने आप से जो लड़ाई होती है वो आपने कैसे जीती? आ, थोड़ा सा बेवकूफ होना बहुत जरूरी है मेरे केस में, बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता था। देखो क्या है ना कि मुझे मुझे बचपन से मुझे अपने बारे में एक चीज समझ में आ गई थी कि मुझे कंपटीशन से सख्त नफरत थी। ठीक है। और हम लोग जब रांची में पढ़ रहा था, सिंधेवीर स्कूल रांची में, क्लास फिफ्थ से ही हमको बोल रहे थे, ट्रेन कर रहे थे, 10th का एग्जाम आएगा आईसीएसई बोर्ड, वो कंपटीशन वो तुम निकल जाओगे ना तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। तो मुझे मैं आई जस्ट विड्रू, कि मैं आई गिव इन माय पेपर्स, मेरे को नहीं करने का ये कंपटीशन। दिस वाज वन मोटिवेशन इन एडिशन टू द फैक्ट कि मुझे सिनेमा बहुत पसंद है। ठीक है। अभी कोई पता नहीं था कि कैसे कैसे करते हैं, आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया, like any boy of my age back then, ki if I'm going to land up where I actually did, but मुझे बस वो तरीका ढूंढना था। Actually, I think I this by the time I came to films, now this was late 9, I started working in 2000 actually. So एक मास कम्युनिकेशन बोल करके एक मुर्गा आ गया था हमारे टाइम पे। तो आप जो है अपने फैमिली को थोड़ा बेवकूफ बना सकते थे ये बोल करके कि नहीं, तो मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, मास कम्युनिकेशन का कोर्स है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहा हूँ। तो उनको लगता था पढ़ ही रहा है, and basically what you did was you just came to Bombay and started you started trying to get work in the film business. But I could have landed up anywhere, there is no doubt about that. So I think I could take that risk. मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ अपनी लाइफ में, इट्स एविडेंट इन माय मूवीज आल्सो, कि एक लेवल का रिस्क रहता है इन द वर्क दैट आई डू, बट कैलकुलेटेड रिस्क रहता है। इतना रिस्क रहता है कि ऐसा नहीं करूंगा कि यार कोई अगली फिल्म देना, यू नो तो वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ मैं। बिना कैलकुलेशन के मैं कभी रिस्क नहीं लेता हूँ। तो इतना भी दिलेर आदमी नहीं हूँ। तो but in this case, making the leap from at that time, our family, my family is still in Jamshedpur now. That time we were in Jamshedpur. तो वो जमशेदपुर से ट्रेन लेकर के बॉम्बे आकर के, without knowing anybody, I had never been to Bombay also. I didn't even know about FTI actually. मुझे पता भी नहीं था FTI होता है, SRFTI तो दूर की बात, मुझे पता भी नहीं था। बट जेवियर्स कॉलेज में मास कम्युनिकेशन का कोर्स में एडमिशन मिल गया। तो वो, हाँ, वो एक रिस्क था, बट मुझे पता नहीं था कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। मैंने एक बार अपने फादर से बात भी किया था कि और कुछ नहीं हुआ तो माय फादर यूज्ड टू बी, आई मीन नाउ ही इज almost 70, but back then he's just about to quit his job and he's doing a lot of financial consultancy for a lot of firms, factories in Jamshedpur. तो अगर कुछ नहीं हुआ तो वहां कहीं मैनेजर लगा देंगे मुझे किसी एक फैक्ट्री में, इतना तो इन्फ्लुएंस है। तो वैसे करके मैं आ गया था। लेकिन एक डिफरेंस बताता हूँ, जो मैं आया ना लेट 90s 1999 में जब मैं आया बॉम्बे, कंपेयर टू से 10 इयर्स बैक, 10 इयर्स बैक मैं नहीं कर सकता था ये, लेट 80s में नहीं कर सकता था ये, फॉर द सिंपल रीजन कि मेरे आने तक भी काफी एवेन्यूज खुल गए थे, और कुछ नहीं होता ना तो किसी टेलीविजन स्टूडियो में मुझे एग्जीक्यूटिव का तो नौकरी मिल ही जाता। मैं पढ़ाई लिखाई किया था, हिंदू कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है, और कुछ नहीं तो इंग्लिश तो अच्छा टाइप कर सकता हूँ। तो ये करके मैं कहीं फिट हो जाता। ये कॉन्फिडेंस आने के 1 साल तक आ गया मेरे को कि हाँ, इफ आई suck at filmmaking, I'll probably be able to get a job somewhere, so I don't have to वो जो कहानियां होती थी ना, जो हम पढ़ते हैं जावेद अख्तर साहब के बारे में या अमिताभ बच्चन, कि मैं आया और मेरे पास नहीं था, चेन्नई रोड स्टेशन पे मैं सोया रात को और एक चने वाले ने दया दी करके, वो खत्म हो चुका था बाय द टाइम आई केम। सर यहाँ से मतलब मैं पूछूंगा कि विशाल जी का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब उनसे आपने काफी कुछ क्राफ्ट का सीखा, तो उनसे मुलाकात कैसे हुई और वो सीखने का वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ? या
विशाल जी से मुलाकात मेरी हुई थी 2001 में, अराउंड नवंबर। और मैं तब काम की तलाश में था, बिकॉज मैंने एक फिल्म करी थी, और बहुत ज्यादा ऑब्वियसली फर्स्ट फिल्म से कुछ पैसे वैसे ज्यादा मिले नहीं थे। और लेकिन वो बहुत ही मेन स्ट्रीम टाइप की बॉलीवुड फिल्म थी, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स थे उस कौन सी टाइम। थी सर, वो कौन सी थी? शरारत बोल करके एक फिल्म थी, शरारत। उसमें अभिषेक बच्चन वाज द हीरो, हाँ अमित हाँ, देखी हुई। देयर, दिनेश पुरी वाज देयर, या। तो आई वो करीब about 1.5 years I worked on that film, and I started from like being a runner, because कुछ भी नहीं आता था ना तभी, लेकिन काफी कुछ सीख लिया था। एडीज का काम क्या होता है वो सीख लिया था उस फिल्म में। लेकिन आई वाज वेरी फेड अप वो फिल्म करने के बाद, बिकॉज ऑब्वियसली फिल्म मेकिंग तो नहीं आता था, लेकिन फिल्म मेकिंग कैसे करना चाहिए ये नहीं आता था, कैसे नहीं करना चाहिए वो सीख लिया, है ना। तो जस्ट द वे उस जमाने का जो ओल्ड बॉलीवुड स्टार सिस्टम जैसे फंक्शन करता था ना, इट वाज लिटरली, आई मीन, काउंटर इंट्यूटिव वे ऑफ वर्किंग, because of to preserve some sort of a bullshit system. So it was very disappointing just to watch that system. Filmmaking is great, but just the system did not appeal to me at all. मुझे लगा कि पूरी जिंदगी ऐसे सिस्टम में काम करूंगा तो मैं पगला जाऊंगा, यू नो, आई वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो मैं उसमें घुसना नहीं चाहता था दोबारा। आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स। आई थॉट माय प्लेस इज गोइंग टू बी, you know, doing more smaller stuff, trying to find more art house kind of work, because at least people. I also briefly had worked with Ritu Ghosh for about 3 or 4 months during that time. Uh, and that was when I heard that Vishal Bhardwaj, I got to know through a common friend that Vishal Bhardwaj is looking for an AD. And although I was reluctant at first, but I was completely broke. पैसा था नहीं, तो पैसे चाहिए थे, तो मैं गया मिलने के लिए उनको। एंड फर्स्ट मीटिंग वाज, yeah, it was great. I mean, we liked each other and all of that, but I didn't know anything. And वहां से I joined Makli, but it was very late. I joined Makli like 1 week before the shoot or something. And वहां से our relationship grew really. I had no idea at that point in time कि मैं इतना टाइम काम करूंगा उनके साथ. I worked with him for the next 10 years after that. And there is no doubt about the fact that it is because of him that my journey became the journey it is today. You know, I still wanted to become a director, but I did not have the means for it. I did not understand कि होता कैसे, ठीक है ना। अभी आई वाज जस्ट फोकसिंग कि एडीज का क्या काम होता है वो समझ में आ गया मेरे। लेकिन काम करते ही 1-2 साल, 1 साल में, 1 सवा साल में ही स्टार्टेड पुशिंग मी कि डायरेक्टर बनना है तो राइटिंग करो। आई वाज ऑलवेज अ लिटरेचर स्टूडेंट, बट मेरे को ये समझा नहीं था कि मेरे को स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा कभी। आई थॉट ऐसा होता कि कोई स्क्रिप्ट लेके आता है डायरेक्टर के पास, फिर डायरेक्टर देखता अच्छा मैं बनाता हूँ, ऐसे होता है, मुझे ऐसा लगता था। देन ही इम्प्रेस्ड अपॉन मी, नॉट ओनली डिड ही इम्प्रेस्ड अपॉन मी कि तुम स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो, ही ऑल्सो कि जब मैं आया था तो मकड़ी का शूटिंग पे मैं आया था, लेकिन मकबूल का उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट कर लिया, यू नो। एंड उसके इमीडिएटली बाद, मकड़ी रिलीज होने के पहले ही वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन मकबूल। एंड उसकी कुछ सीक्वेंसेस वर नॉट रिटन आउट, दे वर जस्ट 1 लाइन 2 लाइन में लिख दिया था, ऐसा हुआ। So when Abbas Tayarwala, who was the co-writer, he used to come for meetings, he used to make me sit also, you know, just to witness how director and writer are working. And it was not even, he was so kind to me, because it was not even that कि तुम चुप करके बैठो और ऑब्जर्व करो। He would turn around and ask me कि चौबे कैसा लगता है तेरे को, you know. So he would value my opinion also. This I think was very important to my growth, I think, and I owe it to him, because he created the right environment and space for me to grow, and he put me in a spot, you know, where I was forced to think, you know. सर ये आपके राइटिंग के प्रोसेस में थोड़ा घुसते हैं, इसके लिए मेरे पास काफी सारे सवाल है, लेकिन मैं सबसे पहले पूछूंगा कि ये मतलब आप जो जब लिखना शुरू करते हैं, तो मैंने आपने ज्यादातर को राइट किया है, तो ये को राइट का प्रोसेस कैसा होता है जी? दोनों बैठ के लिखते हैं, तो ये कैसे होता कैसे है? जैसे आप और सुदीप शर्मा हो गए, या फिर जब आप विशाल भारद्वाज के साथ भी लिखते थे। और दूसरा कि पहले क्या स्टोरी आता है या पहले कैरेक्टर्स आते हैं? जैसे उड़ता पंजाब के टाइम पे टॉमी सिंह आ गया पहले, उसके इर्द गिर्द आपने कहानियां मतलब पिरोना शुरू किया, कैसे होता है वो प्रोसेस? जनरली हाँ, मेरा तजुर्बा यही रहा कि मैंने ऑलमोस्ट सारी फिल्में को, यू नो, को राइट ही की है, कभी एक राइटर के साथ, कभी कभी 2 या 3 राइटर के साथ।
तो आई फॉर अबाउट लास्ट 15 years तो मैं एक प्रोसेस पे काम करता हूँ, देयर इज अ मेथोडोलॉजी, बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स, तो बेसिकली क्या हो रहा है, 3 लोग बैठ के या 2 लोग बैठ के कमरे में बात कर, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक really. You're just talking incessantly, you know. और जनरली क्या होता है कि अब जैसे अभी आप ये मैंने लिखा है मारिन भौमिक वाला जो है, ये मैंने नीरेन भट्ट के साथ लिखा है, ये इसमें तो कहानी था हमारे पास, we had to think about the new setting, we had to think about, we made some critical changes to the plot also, so we had to think, but the bone of it was there, the basic the base of it was there. Similarly when you're doing Othello, you know, बेसिक तो आपके पास है, तो आपके पास कहने के लिए कहानी है, लेकिन जब आप उसको अडेप्टेशन में, स्पेसिफिकली अगर मैं अडेप्टेशन की, मैंने 2 टाइप की क्रिएटिव कहानी क्रिएट भी किया, अडेप्टेशन भी किया है, तो अगर अडेप्टेशन के बारे में बात करूं तो इट्स नॉट वेरी सिंपल, इट्स नॉट सो सिंपल कि अच्छा 15th सेंचुरी यूरोप, 16th सेंचुरी यूरोप, 21st सेंचुरी मेरठ हो गया, इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। तो आप जब वो चेंज करोगे तो आपको वो पैरेलल्स ढूंढने जाओगे कि अच्छा हु इज गोइंग टू बी दैट, हु इज गोइंग टू बी दिस, तो आप उसका अब आप कैरेक्टर्स को स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में लेके आ रहे हो, you know, अगर आप स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, तो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। फॉर एग्जांपल ईगो इन ओमकारा इज मैरिड, जो कि ईगो उसमें नहीं है वैसा, यू नो, सो थिंग्स लाइक दैट, थिंग्स चेंज। as opposed to Othello, we have a very detailed first act of Omkara, जिसमें पूरा वो कैसियो या केसु फिरंगी नार केस का कैसे उसको बनाया जाता है, you know, so we have that process, but definitely the advantage is that you have a ready story, you have to structure it well, you have to structure it, you have to find the parallels, you know, that work, and quite often you have to change things also which are very important, like for example मकबूल में I think wonderful change जो उन्होंने किया कि witches को पुलिस बना दिया, because I think it's a great idea, because you could have still done Macbeth, गैंगस्टर ही पिक्चर होता, उसमें एक फैंटेसी सरियल एलिमेंट होता कि एक्चुअली यू नो आप दादर से जाओ तो पीछे एक स्लम पड़ता है, उस स्लम में 3 चुड़ैलें रहती है जो कि वो स्लम में अपना झोपड़ी में ये करती, you could have done that, nobody would have said anything, in fact जो लिटरेचर पढ़े हुए लोग हैं वो तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा पैरेलल ढूंढना है, इनफैक्ट, बट आई थिंक बिकॉज यू आर मेकिंग मकबूल इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ गिविंग यू अ सेंस कि इट्स रियलिज्म में सेट है एंड ऑल ऑफ दैट, I think that was a great idea. So some critical changes do happen when you do adaptations, given the tone of your own adaptation. As far as the original is concerned, I think what also happens is that I think mostly my process is working with characters, starting with characters. You know, चाहे वो सोनचिड़िया हो, चाहे वो उड़ता पंजाब हो, चाहे वो इश्किया, you know, I have always started with characters. And then arrived at the story. तो जैसे इश्किया के बारे में बोलूंगा तो मेरे पास एक, मैंने कभी इश्किया के 2-3 साल पहले ऐसे ही कभी मेरे को शॉर्ट स्टोरी लिखने का शौक था एक जमाने में, अब तो नहीं लिखता हूँ, लेकिन तो मैंने एक कोई शॉर्ट स्टोरी लिखा था about this girl called Krishna who's like 18-19 and she gets married and she has an affair or whatever, something like that, like very manohar kahaniya, pulpy kind of a short story I had written, and then when that character I had, and then I got a brain wave कि you know अरे यार इस वो character inspired था, जैसे मैंने interviews में बोला, it was inspired from some of the women that I have encountered in my own family, in my, you know, in semi-urban, you know, rural settings in you know, in India, especially in UP, wherein साड़ी पहनी हुई है पॉलिएस्टर की और घूंघट भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सबजुगेटेड वुमेन है, लेकिन जब मामला खुलता है तो पता चलता है सारा पावर तो इधर है। वो मुझे बड़ा कमाल का लगता था कि इन हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी you'll be surprised how many women actually wield the stick of the house. I mean, you know, that's wonderful to know, while they also conform to the patriarchy. तो वो मुझे बड़ा अमेजिंग लगता था, तो मैं सोचा था अगर ये मोमेंट का कॉन्फ्रंटेशन में कर दूंगा 2 macho men के साथ, men who वो machismo है, you know, और it was symbol for me, one is a poet, one is a lusty horny bastard,
You know, two sides to every, all of us, all boys, all men, you know. So basically I separated, एक बंदे को मैंने दो बंदा कर दिया, and I said two men who are defined by their macho, you know, and they, इससे पंगा हो गया, you know, they confront, and then what happens, that's how it started, you know. And then from there वो plot बनाना शुरू किया. प्लॉट बनाना एकदम ही नहीं आता था उस जमाने में, एक्चुअली आई बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज विशाल जी के साथ भी जो काम किया था वो सब रेडीमेड प्लॉट्स था ना. ओथेलो किया, उसके पहले ब्लू अम्ब्रेला किया, रस्किन बॉन्ड का कहानी था हमारे पास, ही कहानी था, यू नो. तो अब ओरिजिनल स्टोरी का तो प्लॉट बनाना ही नहीं आता था. जब पहला ड्राफ्ट किया था इसका तो बहुत ही बेकार प्लॉट था, फ्लेवर वही था फिल्म का, बट प्लॉटिंग एकदम बकवास. एंड देन फिर दोबारा सबरीना को लेके आए कि यार इसको कुछ बचाओ, इसका कुछ सर्जरी करके इसको करते हैं. देन I went to the US and I spent like 1 month there with her, and we actually created the plot. But we had the substance of the film, we had the basic idea of the film in place by then. Abhi, because of experience, I'm slightly better at creating plots, you know, slightly better, you know, although you still struggle with it. And so the one thing that I have learned, that I have started doing, कि अगर process बताऊं, चाहे मैं एक writer के साथ कम करूं, दो या कभी तीन भी, जैसे मैंने अभी पूरा सीरीज लिखा है जो कि मैं नेटफ्लिक्स के लिए कर रहा हूँ. इट्स अ 8 episode series which I worked with 3 young writers. They came to me with the concept and I really liked it, and then I developed it with, so 4 of us were doing it. So basically what you do is, first stage of it is you're just sitting and talking, just baatcheet ho raha, you know, you're just talking at random, you're not talking specifically, you're not talking structure, progression kya hai, you're just talking किस टाइप का है ये, किस टाइप का स्टोरी है, किस टाइप का फिल्म है, किस टाइप के सीन्स होंगे इस पिक्चर में. We call it scenes that you would like to see in a film like this. Just talk at random and you collect all of this, you make notes and you collect all of this material, and then you start with index cards, you know, where you actually start structuring it. And you don't get into write. I write very late. So first, if the entire writing process, for example, is 1 year, I think 9 months you will not write anything. You will just do all of this. When you're completely satisfied, that's when you will start doing the beat sheet and then the final dialogue draft. तो ये इस टाइप का कुछ प्रोसेस होता है. डायलॉग ड्राफ्ट के करते वक्त आप बैठ के एक दूसरे के साथ नहीं लिखते. One can do it individually, you know, whosoever is in charge, and then there is a back and forth. He sends, you work on it, you send, and that sort of tennis match keeps happening. सर ये डायलॉग के बारे में आपने बताया, तो ये सारे डायलॉग्स आते कहाँ से? वो उड़ता पंजाब का क्लाइमैक्स हो रहा है और आपका डायलॉग, वो कैरेक्टर बोल रहा है कि जमीन बंजर औलाद कंजर. ये सब पंजाब में आप जाओगे तो लोग बोलते हैं. A lot of it actually, I mean, you know, I've also had the privilege, I've contributed a lot to the dialogue of my films, but I've also had the privilege of working with some fantastic dialogue writers in my life. Be it Vishal or be it Sudeep, they're great. Both का process में मैंने ये देखा है कि जब हम मुमकारा कर रहे थे तो हम मेरठ, मुजफ्फरनगर रेरे में हम लोगों ने ट्रैवल किया. जब उड़ता कर रहे थे तो हम पंजाब गए थे, या सुनचिड़िया कर रहे थे तो चंबल गए. You hear it, you actually hear these things. Zameen Banjar Aulat Kanjar is a very common thing that you will hear in the streets of Punjab. I mean, especially in rural Punjab. और जैसे ओमकारा की भी लाइनें हैं कि उनके, आई रिमेम्बर वी वर टॉकिंग रिसर्च के लिए, वो ये एक्स गैंगस्टर है, कोई मेरठ में कोई बंदा हमारे होटल में हमसे मिलने आया, बोलता रहे वो तो बहुत बड़ी चीज है, उसके तो मुंह से भी चिराग जलते हैं, you know. Like, and we just look at it and laughed. I mean, you know, so these are wonderful things that you come across, you know, when you are spending time in the region. I think that's very important. अगर आप एक, वही कह रहा हूँ कि अगर टाइम एंड प्लेस का कॉन्टेक्स्ट है आपकी कहानी में ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो एंड मीट पीपल फ्रॉम दैट. जस्ट लिसन. And I think that listening process of whatever time you spend, you need to spend, it actually gives you a lot. सुनचिड़िया में इसकी लाइनें सुनी थी. सर मैं लास्ट सवाल पूछूंगा, मैंने काफी आपका वक्त लिया. ये जो मतलब आप जो जब एक फिल्म को बना रहे हो, तो जैसे मैं मतलब ओम का मतलब ये मकबूल के बारे में कहूंगा कि मुंबई अंडरवर्ल्ड दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर्स है वो लोग एकदम उर्दू में बात कर रहे हैं, चुस्त उर्दू बोल रहे हैं. या फिर जो सोन चिड़िया में जो बागी है, वो दे आर लुकिंग फॉर रिडेम्पशन, मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जैसे दद्दा का कैरेक्टर हो गया या सुशांत का जो कैरेक्टर हो गया. तो मतलब ऐसा तो एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग थिएटर में बैठे हम लोग को बिलीव हो रहा है, जब तक वो देख रहे, तो वो कैसे एक डायरेक्टर वो ऑडियंस को वो उस मतलब दुनिया में घुसा ले. जैसे ये तो रियल नहीं है कि उर्दू में बात करेंगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड वाले, लेकिन वो कैसे वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि हम लोग को वो सूझता नहीं है जब हम लोग देख. Yeah, I mean,
there is cinema is not about fact; it is about truth. Correct, and it is not about. It's not so much about reality as it is. I mean, realism is a tool. It's a trick in a filmmaker's bag. I give you the impression that this is happening very real. I'll tell you a very simple thing. As an audience, you will realize this. One big difference as a child I used to see between commercial cinema and art cinema is background music. Simple. You know, वही गांव में एक बंदा चल के जा रहा है तो उधर 1000 वायलिन बज रहा है और वही श्याम बेनेगल का पिक्चर में जा रहा है तो चिड़िया सुनाई दे रहा है. Simple. This is realism. This is fantasy. It's as simple. Just to give you a very basic example. So realism is a tool. It's a trick that the filmmaker can employ to give you a sense of you being there and you feeling that this is happening for real and all of that. However, exactly, you said it correctly. I mean, Maqbool is not real. I mean, it's not even shot in Bombay, crying out loud. It's shot in Bhopal mostly. And even the architecture of Abbaji's home is not something you will find in Bombay. Although some of the language that जो उर्दू बोली जा रही है, there were हाजी मस्तान का था शौक बोलने का, लेकिन ऐसे उर्दू नहीं. हाजी मस्तान was not from North India. So, he did not speak like that. उसको शौक था. दिलीप कुमार से दोस्ती थी तो उर्दू में थोड़ा बात करने का उसको चस्का था उसका. But the thing is, it does give you because it's a technically very competent film. It creates that it also borrows a lot of tricks from art house cinema. मकबूल, मकबूल is जो मनी रत्नम ने जो काफी किया था ये from Vishal owes a lot to Mani Ratnam, and a lot of us owe a lot to Vishal and Anurag and all of that. So basically what they started doing was they borrowed a lot from the aesthetics of art cinema or parallel cinema, or whatever you want to call it, and but the stories were thoda sa grand, like commercial cinema ke ethos ki. If you take a Roja, technically there are a lot of things he's borrowed from art cinema, but वो झंडा लेकर के लपेट के वो जागो बज रहा है, वो राउजिंग म्यूजिक, तो वो भी हो रहा है. So Maqbool is a bit like that. So what started happening, parallel cinema अपना खत्म हुआ ना. These new filmmakers, Mani Ratnam, Ramu, and then उसके बाद विशाल अनुराग आना शुरू हुए, जो कि mainstream और art house का merge करने लगे instead of being a parallel. They started merging the middle cinema वो create करने लगे, which I think is very popular in the West. If you take Martin Scorsese and all that, उसकी फिल्में commercial होती हैं लेकिन बहुत art house से elements लिए होते हैं. The way they express sound, the way they use music, all of that, the way they stage their scenes. I think it's in there that you get a sense of realism. And I think what has happened now, एक मैं बात बताता हूँ तुमको. Also, what these filmmakers did, like Vishal and Anurag, was कि अच्छा मैं जनरल गैंगस्टर नहीं है, सूट पहन के नहीं आ रहा, ये स्पेसिफिक गैंगस्टर है, ये मेरठ में मिलता है तुमको, या ये स्पेसिफिक कहानी है गुलाल जैसे, ये राजस्थान में कॉलेज में हो रहा है. And I remember back then I was in my early 20s and people used to say, can't make films like this. People are not going to be able to relate because तुम राजस्थान में तो राजस्थानी ही देखेगा ना. Why will somebody sitting in Kolkata watch it? This used to be the common thing that trade used to say. अब तुम commercial cinema देखो, बद्रीनाथ की दुल्हनिया and all that, तो वो कोटा है और वो झांसी है. They are very specific. Commercial cinema borrows from non-commercial cinema all the time. So that's why parallel cinema is important, because this is what moves our cinema forward, as opposed to commercial cinema. Commercial cinema is always conservative, so they don't move it forward. Well, now talking about the elephant in the room, The Ray, which is coming on Netflix on 25th of June. What actually inspired you to make the film on the short story Badin Bhumikar Baram? Basically, this was a project that Viacom and Netflix came up with, and by the time I joined in, I think Srijit and Vasan were already in it, and Sayantan, who's the showrunner, came to me
I was very happy when when they said, would you like to do it? And I said, definitely. And then he came to me, so they had some rights to some stories. So 5-6 stories they gave to me. You choose what you want between those. And they wanted me actually to do something else. Now, I had read Indigo and a few other short stories. Uh, I, I knew the flavor of, his short stories. I was very surprised by Baran Bhaumik for the simple reason he was dark psychological space mein nahi tha. It was one of the light-hearted stories, in the sense. Although it is psychological, you're getting into inside his head and all of that, but it's more a comedy of manners. It's more like that, which I really enjoyed it because I said, okay, surreal work, वो सब बहुत किया है, वो सब बहुत पढ़ा है, and somebody who's read Ray's short stories will naturally think that is the kind of flavor. I thought this was a new flavor, which I had. So I got attracted to it because it was I saw the potential of a very funny film, and which is saying something. It's not like just like a comedy which doesn't mean anything. So that's how I got attracted to it, and thereafter it was a question of working and finding the new setting, which I did, and yeah, and now I think it has a life of its own in the sense that while it's definitely an adaptation of Baran Bhaumik, but it has also got a life of its own because some of the changes I've made are pretty at the heart of the matter. Also, like we made a video on the LGBTQ movies in India, and we mentioned De Rishke there. Yeah. So how did you conceptualize De Rishke and think of Madhuri for the role of Begum, like who is known to play this heterosexual roles, and then a very restrained portrayal of a relationship between Begum and Munia. So I mean, it's interesting to see such a subtle way of portrayal of LGBTQ in a rather mainstream Bollywood film. So yeah, and I mean, because it's a mainstream Bollywood film, it is so restrained because the thing was that Madhuri was in the project even before the film had a same-sex relationship idea. So the thing with De Rishke was that it was a project even before I was there. The producers were very serious about making a sequel, and I was very reluctant for the simple reason that I did not have a story. So they got a writer on board who came up with a setting and some sort of a story. And they worked on it for 6 months while I was not even involved in the project. And then I realized some other scripts that I was developing, they were not working out. So I said, okay, theek hai, dikhao kya hai, main karta hu. And then I got involved in that. While the story that they were working on had some potential, I think it was very far away from what I would like to do. So I started developing the story with Vishal independently, and we were struggling. Okay, and we were there but not there. वैसा हो रहा था कि अच्छा flavor crack हो गया है, एक level का plot भी आ गया, मजा नहीं आ रहा है. There's something too slight about the film. Something is wrong. Motivation of the characters are not coming together. पैसे के लिए कर रही is no longer not fun. I mean, at least she's not doing it for money. She was doing it for some personal emotion. वो नहीं बन रहा था. And then we had a moment of clarity wherein we decided the only way the story works if Begum and Munia are in love with each other. Then they are doing it for love, and then the story makes complete sense. So how did you Sorry. No. So I was saying I interrupted you. Sorry, go ahead. Like I was about to ask, how did you convince Madhuri? Yeah. Yeah. So that was the hard part. So what happened was we became so happy with the idea that we wrote we wrote scenes, and they were pretty much out there. Where the women are making out and things like that. and then I went to Madhuri Dixit. And I have taken 30 years to build my career. I am not destroyed because of your film. So the condition was कि boss इसको थोड़ा tone it down, otherwise I will not do it. And at that point in time, my producers could not afford to let go of Madhuri Dixit and make the film with somebody else. So I was between a rock and a hard place. So I decided. Then she was against the same-sex idea only. But then I convinced her, okay, I'm going to tone it down. And if you are very, very dumb, then you probably will not even figure it out. You will just think you're Saheli hai.
like that people will think. I will remove the sex scenes and all of that, but I will do this, so shadow play, वैसा करके मैंने. Vishal had a good idea कि लिहाफ से, लिहाफ करते हैं. And that idea came pretty early on. When I came up with the idea of same-sex, love story, I convinced Vishal about it. And then when Vishal got convinced, he said, then to ye to begum hai, to ye to lihaf hona chahiye. And then I was very pleased. Then that was the moment I said, हाँ, अब बात बनी. Now this is the film I want to do. So we actually borrowed completely from Lihaf and paid a homage to Chuktai's short story, which we did. And yeah, but you know what? I mean, if I could have gone completely all the way with it, I wouldn't have minded at that point in time to go all the way with it, and my producer would not have made any money. The little that they made in Dead Ishq Kiya, they would not have made. Although it was not a hit by any stretch of imagination, it was not that big a financial loss, So, but मैं full on करता तो they would have been bankrupt. So what do you think? I wanted to ask you. So, do you think that if you would have done it like full on, like the way you conceptualized Dead Ishq Kiya in the first place, how different of a film would it be? Do you think, would you like that more, or do you think this movie which you have done with the constraints, this is the one which you would rather make now with the information? I mean, it would have been a different film, because that film, when we were thinking about it, was also structured slightly differently. Here we talk about Bunia and Begum's relationship very late into the plot, after they've already left the mansion. It's in the last third of the story that we tell the audiences. Usme alag tha. Usme while they are there, while Arshad is trying to woo Huma Qureshi and Khalujan is trying to woo Madhuri, आपको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ तो ये राड़ा, something else is going on here. So that would also have worked. I think that film potentially would have been more focused in the sexual interplay of characters more than and the bag of money was just throwaway. हाँ कुछ है, वैसे रहता वो. It would have been more, but the good thing that when I was not going to do that, then Jan Mohammed became a very important character, and then I had to bring that element into it and make it again about power, make it again about lust for power as opposed to lust for love, which these two characters are, or these four characters are busy with. Also वो एक revelation का kind of twist जब वो shadow में जब हो रहा है, I remember clapping, अरे ये भाई ऐसा था. And you rightly said, like, I don't think like everyone in the audience might have picked that, but those who have picked that enjoyed the film even more. Yes. And I think, Madhuri's casting as one of the same-sex couple, that's a statement, because she is the Dagda girl of two generations, as we mentioned. When she does that, that's such a support and statement for the community. I love that scene where, she's dancing and Huma joins her, and the two men are, just staring at their, stealing the glimpses from either side. That's such a beautiful scene. Now that you realize what's the actual subtext of the thing, in the second viewing, that scene becomes so poetic and beautiful. Yes. Thank you. Yeah, I mean, and that was the intention. And we directly have Nasir say it. I think that's one of my most favorite shots. One of my most favorite shots in my movies, the 4 films that I've made. That one shot, I'm actually although I don't like to watch my movies, but every now and then you come across that image, when once in a while. And we made Nasir's characters, Khalujan say ki lihaf mang lete hain, so we pay the homage. And also it's not just the shadow and the looming shadow. It's also the men who are completely tied up and powerless at that time. This is not even your film, I seem to be saying. Exactly. सर ये आप ये इसके बारे में बात कर रहे थे कि 2019 में मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, वहां पे आप कह रहे थे कि जब मैं वेब में काम करूंगा तो वो लिबरेट करता है फिल्म मेकर को अपनी कहानी अपने हिसाब से कहने, जो आपने अभी कहा कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म में तो आप बोल नहीं पाए, उसको वैसे बना नहीं पाए. तो लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि OTT के ऊपर भी कानून लागू हो गए और उसके वजह से तांडव को जो हुआ, फिर फैमिली मैन को भी अपना वो बहुत कुछ एडिट करना पड़ा. तो आप जो बना रहे तो उसमें भी क्या अभी आपको वो रेस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा अपने आपस में? I hope नहीं डालना पड़े यार, that's what I hope, because I think although the show that I'm making, it's not by nature political. It's more a dark comedy thriller, and this time there is some
sexual play in it, with characters and all of that. But yeah, it is pretty. It is pretty. It is mature content. It's adult content. It's fun, but it's fun for adults. So in terms of the language of the show, in terms of some of the sequences, which are pretty much out there. I hope यार मतलब I hope कि इस लेवल का नहीं हो censorship. मुझे लेकिन OTT में censorship बातें तो कर रहे हैं, बट मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता कि OTT को censorship करेंगे कैसे. Because सेंसर का दफ्तर मैंने देखा है बॉम्बे में. मतलब 100 फिल्में तो संभाली नहीं जाती इनसे. ये हर हफ्ते जो 4 shows आ रहे हैं, कैसे संभालेंगे? Where do they have the resources to do it? Where do they have the staff to do it? So I don't know how they're going to be able to. That's why they will create the ruckus once it is released more than, so that आप डर जाओ, आप करो ही नहीं वैसे content. That is going to be their MO rather than trying to officially try to control the content. They will let it release it. I just hope things. I think. I mean, we're all troubled by the present dispensation, but I think what they're looking for is, what they're more afraid of is political content. And I think filmmakers just have to become wiser, and especially when they're directly making political content, they have to be very careful about what they're saying. And generally, you should be very careful and responsible about what you're saying. You can't be cavalier about it. So that they can't. I mean, if they try to raise their voice, they're going to be caught. वही करना पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं अभी, because things are going from bad to worse in all spaces. Give us so much of time. Thank you so much, sir. We are truly indebted. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, guys. Thank you.